my channel Learn with Experience. In exercise 5.2 from the NCERT क्लास 10th की बुक है मैथ्स की और एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। सो हम शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का विदाउट डिले। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। जो यहाँ पर ए एन दिया गया है nth टर्म ऑफ एपी, मैंने आपको उसको टी एन का नाम दिया था बिकॉज टर्म ऑफ द nth टर्म होता है इसलिए मैं लिखा था, बट आप ए एन भी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर जो ए एन गिवन में हम देखते हैं, सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन में क्या है, गिवन दैट क्या दिया है, ए दिया है 7, डी दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये फर्स्ट पार्ट की। तो ए इक्वल टू 7 है, डी इक्वल टू 3 है, एन इक्वल टू 8 है। तो कह रहा है ए एन फाइंड आउट करो। आप इसको ऐसे समझना, ए एन ना हो करके दिस इज द टी एन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है। सो वी नो दैट nth टर्म फार्मूला, nth टर्म मामला ए एन का, तो आप ए एन कह लीजिए, कोई मसला नहीं करके। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। एन को एन ही है, कोई दिक्कत नहीं, एन के जगह हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, एन को ऐसे रहेंगे, बट हम वैल्यू प्लेस करेंगे किसकी, हम वैल्यू प्लेस करेंगे इज इक्वल टू किसकी, हम वैल्यू प्लेस करेंगे ए और डी की। एन इक्वल टू 8 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 8 दिया है, तो कह रहा ए एन टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम सीधा यहाँ पर रखेंगे ए एन की जगह, यानी हम कहेंगे ए 8, कौन सा टर्म निकालना, ए 8 निकालना है। तो अगर ए एन निकाल तो ए इक्वल टू दिया हुआ है 7, सो वी जस्ट पुट द 7 प्लस ब्रैकेट के अंदर डी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एंड वी जस्ट पुट 8 माइनस 1। ओके, सो फाइंड आउट द वैल्यू। ए 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 प्लस 21, बिकॉज 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, 7 3 is 21, दिस इज इक्वल टू 28। सो ए एन इज इक्वल टू 28। वी जस्ट प्रोसीड फॉर द, so now we will proceed for the second questions. Here is the a is equal to 18. This is the second question. Second questions, a is equal to minus 18 and d not found, so we can question mark इसे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब n इक्वल टू 10 है, आप देख सकते हैं, एंड ए एन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 0। सो वी नो दैट सेम थिंग, nth टर्म फार्मूला ए एन के प्लेस पे 0 दिया हुआ है। ओके, सो वी पुट द 0, ए इक्वल टू माइनस 18, सो वी पुट द माइनस 18 इन प्लेस ऑफ ए। सो एन इक्वल टू 10 दिया हुआ है, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ 10, एंड डी इक्वल टू नहीं मालूम है, सो हम वी पुट द वैल्यू ऑफ डी। Okay, so here you can check minus 18 point, it will be same, but 10 minus 1 is equal to 9, यानी कि ये हो जाएगा 9d। okay, you can understand, this is the 0। so here if we do, then we can check 9d is equal to 18, and is equal to 18. If we transfer minus 18 to the left side, then 9d is equal to 18. So I'm just doing that. So here will be the this one, and d is equal to 9 to the 18 divided by 9 is equal to 2.
So here will be the 2. D is equal to 2. Here will be the answer. You can place here the 2. Now we will proceed for the third question. Third question, A is not available. A is not given. We will find out, मतलब A हमको find out करना है, but D is equal to -3 दिया हुआ है. Okay, D is equal to -3 and N is equal to 18 दिया हुआ है. Okay, given that में 18 and AN is equal to -5 दिया हुआ है. Okay, no problem, -5. So we just proceed. We know that in term formula N is equal to A plus N minus 1 to 2. Yeah, Tn is equal to A plus N minus 1 to 2. Where the N is the number of terms. Here this one. So here A I don't know, but A, we know the -5. Tn put the value -5. A I don't know, तो A की वैल्यू A ही रहने देते हैं क्योंकि हमको A को फाइंड आउट करना है. एंड N इज इक्वल टू 18 है तो इसको हम लोग 18 कह देते हैं. एंड D इज इक्वल टू -3 है तो इसको हम ब्रैकेट अभी यहाँ लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा, बिकॉज D वैल्यू इज है इन -3. So we just do that. 18 minus 1 is equal to 17. 17 3 is or minus into plus is equal to minus. Remember that it will be the minus and here will be the A. So 17 3 is 51. 51. Okay. So here will be the -5. So we will solve. If we transfer -15 to here, then it will be A is equal to 51 and minus, it is also the already in -5. So A is equal to 46. This is the answer. You can calculate. This is the basic just calculation, plus and minus. So you can check that. So here will be the third question. A will be the 46 plus 46. Now we will proceed for the question number 4th. Okay, 4th. Given that my A is equal to -18.9 and D is equal to 2.5 and N is not given. N is the question mark, and while AN is equal to is given that 3.6. Okay, so we will now that same formula, nth term formula, in place of AN we just put the value of A, and A is equal to -18.5. we just put the value of 18 and N is equal to not I don't know, but D is equal to 2.5. Okay, so we can say that 3.6 and here is the -18 point, and try to do 18 minus 1 is equal to 17. Sorry, we try to find out the N, not 18. Sorry. Okay, N. So 18.9 plus, if you check, if you multiply 2.5 into 1, then it will be the plus 2.5 N minus 2.5. If once multiply 2.5 into 1, this will be the minus. The second multiplier 2.5 into 1 is equal to 2.5 N. So here will be this. So if we move -18.9 and -2.5 till left side, then it will be 2.5 N is equal to 3.6 already is the left hand sides, then plus and plus 2.5. if you calculate 3.6 595 the, so 2.5 N is equal to 9 plus 5 is equal to 14, 14 plus 6 is equal to 20, 20 carry 2, 2 plus 8 is equal to 10, 10 10 plus
2 और 13 plus 2 equal to 5. Okay, carry to 15 carry 1, it will be the 1 plus 1 is equal to 2. So decimal after 1 point. So here will be, if we calculate just one more steps, if we calculate this one, so it will be divided by 2.5. so if we calculate n is equal to, so it will be equal to 10. If you don't know the calculation of this, just multiply in numerator 10 and multiply in the denominator 10. When multiply the denominator 2.5, then it will be the whole number 25, already over the 25, and it will be remaining the 25 into 25, but 10 will be remaining. So answer will be the A. Here will be the total n is equal to 10. Okay, we will proceed for the question number 5th. Here A is equal to 3.5 and D is equal to 0 and n is equal to 105 and an not find out. So सेम फार्मूला an की जगह पे क्वेश्चन मार्क an ही रहने देते हैं and 3.5 प्लेस ऑफ a की जगह हम रख देते हैं this one place of a, and n is equal to already 105 and d is equal to 0. You always know if any any series in the AP d is equal to 0, then every term will be the only the first number. Every term will be the first number only. So here will be the minus 18 point. So here will be the only an is equal to plus 0. Okay, so here will be 3.5 always. Okay, thank you so much watching our videos. प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। उसको वीडियो बनाने में जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें आप कमेंट करके बताएं, या आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम समझ में उसको बताएं ताकि मैं उसमें और भी करेक्शन कर सकूं, ताकि आपको उसका पूरा का पूरा बेनिफिट, प्रॉपर बेनिफिट मिल सके और आप अपने तैयारी में, अपनी प्रिपरेशन में सक्सेस हो सकें। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।